Thank you, G. Really, it's a pleasure to be here. So, मेरा नाम फराज है. I work in the field of HR. I work with a textile company. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. It's great to do this session. आप लोगों को last bench में आवाज आ रही है मेरी? Okay, perfect. All right. So I assume most of you are students. Okay, and there's some women who have discontinued their work or want to get back into work. ऐसा भी कोई I think I was told कि शायद there's some profile of those people also. And then we have आप लोग शायद faculty से हैं? Okay. अच्छा, so मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं. I'm sorry जिनके हाथ में चाय की कप है, but okay. आप लोगों ने कभी कैच खेला है? क्रिकेट, right? Okay, so I want you to use your left hand. Okay, left hand. और अब इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक टेनिस की बॉल है. टेनिस की बॉल, ऑलराइट. और अब आपने टेनिस की बॉल उस वाली लाइट को मारनी है, उस वाली लाइट को, ऑलराइट. तो करें, लेट्स डू इट. अच्छा जी, हाउ मेनी ऑफ यू आर लेफ्ट हैंडेड? तो 1 2 3. आप बाल सीधे करिए. नहीं, यू आर नॉट लेफ्ट हैंडेड पर्सन. अच्छा, तो 3 अगर आप हैं तो शर्माने की बात नहीं है, मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूं. 1 2 3 4 5 6. Now if you do the same thing with your right hand, right? You have a ball. अभी नहीं फेंकनी. You don't. Where's your ball? Okay. And now do the same thing. अब आप लोग मुझे बताएं, लेफ्ट वाले हाथ से बॉल ज्यादा दूर गई होगी या राइट वाले से? ओके, बैठ जाए. Why is that? क्या वजह है कि आपके राइट हाथ से बॉल ज्यादा दूर जाएगी और लेफ्ट वाले हाथ से कम जाएगी? उसकी क्या वजह हो सकती है? ओके, कंट्रोल अच्छा है. इस पे सवाल बनता है क्यों अच्छा है? क्यों अच्छा है कंट्रोल? प्रैक्टिस, राइट? सो यू बीन प्रैक्टिसिंग टू थ्रो with your right hand. That means कि एक skill है that if you don't have and you want to improve on something, you'll have to practice to make it better. ऐसा ही है? Okay. Now, were you born right-handed? No. So आपने practice, most of the world is right-handed. तो हम left-handies जो हैं वो थोड़े minority में exist करते हैं. तो हमारे लिए दुनिया थोड़ी सी तंग है as compared to आप लोगों के लिए. Because gear का lever आप लोगों के लिए, हमारे लिए गलत जगह पे होता है. दरवाजों के नॉब हमारे लिए गलत जगह पे होते हैं. अगर आप पेन पकड़ें तो पियानो उल्टा लिखा हुआ नजर आता है. अगर आप राइट में पकड़ें तो पियानो सीधा लिखा हुआ नजर आता है. राइट? So the world isn't designed for us, left-handed people. And then one of the problems with our society is that our society is also not ideally designed for women. In the sense that हम लड़कों को मोटरसाइकिल खरीद के देते हैं, अपनी बेटियों को मोटरसाइकिल खरीद के नहीं देते. राइट? सो लड़के अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले जाएं उनके लिए आसानी है, लड़कियों के लिए शायद आसानी नहीं है. तो वर्ल्ड इज स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर अस. अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक जिस मौजूद में बात करना चाह रहे हैं, आई एम यूजिंग गोइंग टू बी मूविंग इन एंड आउट ऑफ उर्दू एंड अंग्रेजी. आई होप दैट्स फाइन. दैट्स ओके. ओके. अच्छा जी, मुझे अगर एक वो मिल जाए. Okay. मुझे आप लोग ये देख के बताएं कि जब आप ये तस्वीर देखते हैं तो आपको क्या, what are the first few things that you notice? Raise your hand and I'll come to you. Yes? Socks. Okay, what's wrong with the socks? Red है और दूसरा कोई और पहना हुआ है. Okay. क्या रेड सॉक्स मैच करते हैं इसे? ओके. कोई और चीज, सॉक्स के अलावा कोई और चीज? शूज. अरे शूज को क्या हुआ? एक ब्लैक पहना हुआ है और एक ब्राउन पहना हुआ है. हाँ, साइड पे पड़ा हुआ है. यस, बट पहना हुआ उसने एक ब्लैक और एक ब्राउन है. एनीथिंग एल्स दैट यू नोटिस? ओके, शू का डिजाइन तो अच्छा है यार. आई वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग समथिंग लाइक दिस. ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, साइड पे पड़ा हुआ है. हो सकता है वो ब्राउन पहनना चाह रहा हूँ अभी. आई डोंट नो. जी. ओके, मे बी ही इज somebody जो
बहुत केयरलेस आदमी है, दैट कुड बी ट्रू। जी मैम। ओके अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं जी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ऑब्जर्विंग। ओके अच्छा, हमने अभी तक जो चीजें यहाँ नोटिस की हैं वो हमने मैंने आपको बता दी। मुझे आप लोगों ने बताया कि लाल सॉक्स पहना हुआ है जो कि बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। आप लोगों ने मुझे बताया कि उसने एक लाल पहना हुआ है और एक मल्टी कलर पहना हुआ है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। आपने कहा एक ब्राउन शू है और एक ब्लैक शू है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। वो पाँव राइट का ऊपर रखता है बच्चा है, लेफ्ट वाला ऊपर रखता है, अजीब सा लग रहा है। जी मैम, यू हैव समथिंग एल्स टू से। माइक उधर दे दो प्लीज। ओ, आप आगे आ जाइए। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ही इज मच कॉन्फिडेंट। ओके कूल, थैंक यू, बिकॉज अब मैं वहीं पे आ रहा था। So when you look at this person, you also notice that he is not fat like me. He's physically healthy, right? He's physically healthy, so he must be keeping in shape, exercise करता होगा। अगर आप जूतों और सॉक्स को इग्नोर कर दें तो you would notice that he's actually a very well dressed person. आपने उसकी chin bone देखी है? Right? It's so nice. You know, he's got a really handsome chin bone. अच्छा, furniture अच्छा है बुरा है? Nice. जो डेकोर है वो थोड़ा खूबसूरत फॉर्मल सा है। Why didn't we notice these positive things? He's possibly a good-looking guy. He's definitely young. You can tell by the cheekbone. He is physically fit. He has a good dress sense. जूतों के अलावा, why didn't we notice that? Okay, so she's saying कि हम जो अच्छी चीजें उसको अप्रिशिएट नहीं करते। Okay, तो मेरे साथ ये हुआ है अपनी जिंदगी के अंदर कि मैंने 9 सब्जेक्ट्स में से 8 के अंदर बहुत अच्छे नंबर्स लिए, और यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स भी बैठे हुए हैं, तो मैं सोच समझ के बोलना पड़ेगा। और एक सब्जेक्ट के अंदर मैं मार खा गया बुरी तरीके से। मैं घर आया, रिजल्ट लेके, और मैंने अपने वालिदैन को रिजल्ट दिया। उस जमाने में पीपल को ट्रस्ट द चाइल्ड टू टेक द रिजल्ट, तो अब तो ईमेल हो जाता है। तो माय पेरेंट्स लोग सेड, ये तुमने उर्दू में क्या बकवास किया? आई सेड, एक्सक्यूज मी, आपने मैथ्स के रिजल्ट देखे? उर्दू में तुमने क्या किया? तुम्हें मैंने बैठ के पढ़ाया था, होमवर्क कराया था, तुम्हें ये कराया था। And I had this barrage of issues of why I have not done well in Urdu. And I said, अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मैंने बाकी चीजों में तो अच्छा किया है। उन्होंने कहा हाँ वो तो करना ही था ना। तो आपकी जो strengths हैं are taken for granted, just the way इस picture के अंदर we have seen that there's so many nice things, but we don't notice those nice things. We pick up what's not correct. Okay? And that's a fundamental flaw. So imagine a world where we start focusing on our strengths, where we say, fine, I'm not good at something and I'm better at others. तो अगर हम अपने उर्दू के रिजल्ट को लेके बैठ जाते, ठीक है, ये 7वीं जमात का वाक्य है, तो क्या मैं उस उर्दू रिजल्ट की डिप्रेशन में जिंदगी अपनी बर्बाद कर दूं, या मैं फोकस करूं कि शायद मैं किसी चीज में अच्छा हूं? मैं आपको एक पर्सनल चीज बताता हूं। मैंने मैथ्स का जिक्र किया। आई रियली एंजॉयड मैथ्स, एंड दिस इज वेरी वियर्ड, आई एम ऑल्सो वेरी वियर्ड, कि मैं फारग टाइम में अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, उस वक्त इंटरनेट नहीं होता था, ठीक है, मैं आई एम वेरी ओल्ड पर्सन, उस जमाने के अंदर जो है ये गेम बॉयज, प्ले स्टेशन वगैरह नहीं होते थे, तो मैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उस जमाने में सोनी के वॉकमैन होते थे। सोनी के वॉकमैन किसने देखे हुए? हमारी ओके, तो गूगल सोनी वॉकमैन। कैसेट, आप लोगों को पता है कैसेट क्या होती है? ओके, थैंक गॉड, मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ। सो हम वो कैसेट प्लेयर के ऊपर गाने लगाते थे, एक साइड पे 6 गाने आते थे और आप वो सुनते थे, और फिर आप साइड चेंज करते थे, आप सुनते थे, एंड आई वुड एंटरटेन माई सेल्फ बाई डूइंग मैथ्स। तो अगर मैं बोर होता था, ठीक है, तो क्योंकि प्ले स्टेशन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ और नहीं करने होता, तो मैं मैथ करता था, एंड दैट्स व्हाट आई वाज रियली गुड एट। आई डिडंट मेक अ करियर आउट ऑफ इट,
ठीक है, आई वर्क इन HR, so I didn't follow a career, but I'm still good at it. मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा देता हूँ, but that's a strength that I had, and I use it in my work, because कोई काम मैथ्स के बगैर नहीं होता unfortunately. तो आपको वो strength मुझे अभी भी काम आती है. So the question is that we will have a lot of strength. आप सबके किसी के बहन भाई हैं? Okay. हम 4 हैं, हम 2 भाई और 2 बहनें. We are not identical. आपके जो बहन है या भाई हैं, क्या exactly आपके जैसे हैं personality? क्या exactly वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं? Right? अब आपके पेरेंट्स एक हैं, आप एक ही घर में रहते हैं, आपका घर एक ही महल्ले में है, आपके रिश्तेदार खालाएं फुफुएं मामा चाचा सारे एक ही हैं, आपके हमसाए एक ही हैं, हो सकता है आपके स्कूल भी एक ही हो, राइट? देन हम एक ही एनवायरनमेंट में बड़े, घर का माहौल भी एक होता है, फाइनेंशियल हालात भी एक ही होती हैं, बट वी स्टिल वेरी वेरी डिफरेंट. दैट मीन्स वी आर ऑल वेरी यूनिक, and there would be things that we be very good at, and there would be things that we would not be good at, right? So if you start channelizing your energy towards things that you are not really good at, maybe you'll burden yourself with undue thoughts. And if you channelize the same energy and say, okay, yaar, we need to focus on my strengths and see what I can do with them, there's a likelihood that you will benefit from it for far more. ठीक है? तो अगर आप एक चीज अच्छा करते हैं, starts to come naturally, right? So मैं जब छोटा था, I think मुझे लगता है अम्मा ने मुझे चाय बनवाने के लिए कहा, तुम बहुत अच्छी चाय बनाते हो. I was probably 14 years old, और I got married 19 years ago. मैं अब तक घर में चाय बनती है तो मैं बनाता हूँ, मेरी बेगम नहीं बनाती, because I enjoy making chai. And please don't tell, Sarah knows already this, but Sarah makes a horrible chai because वो खुद नहीं पीती, so she doesn't know what a chai tastes like. ठीक है? तो हमारे मेहमान भी आते हैं तो मैं चाय बनाता हूँ, मैं सर्व करता हूँ. Because at some point of time, somebody appreciated what I did. I made good tea, and I've been doing it for, and now you'll guess my age, for about 35 years. Okay? Acha. This is a list of things जो कि आपको नजर आ रही होंगी. These are strengths. I want you to read them. आपको पता है? Okay. And I want you to pick 3 things that resonate with you. That say कि यार, okay, ये maybe this is something I have. ये मेरे अंदर है, right? So just I'll give you like 10-13 seconds to read through and find things जो आपको लगता है कि आपके अंदर है as a strength. सारे नहीं हो सकते. I'm just asking you to focus on 3 top things that you really resonate with. You say, yeah, this is me. ये मैं हूँ. This is who I am. All right, I'll give you 5 more seconds. All right, have you figured that out? Was there anyone who was able to find out what are the 3 things that are your strengths? If anybody has figured that out, raise your hand. 3 चीजें. सिर्फ 8-10 लोगों ने किया है ये, मैंने तो बहुत टाइम दिया था यार. Okay, you figured that out? Right? Now, isko just remember that there's a list of things and we're going to come back and reflect on this a little later. Okay? So there would be things that you assume that you are really good at. Now, now, this is what you start with. This is the canvas. कि आपकी assumption है कि आप ये चंद चीजें बहुत अच्छा करते हैं. Right? How do you know this? Why have you picked up what you picked up? If somebody wants to volunteer, that will be really good. If somebody has the courage to say कि जी मैंने ये 3 चीजें पिक की थी, आपको आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा because माइक थोड़ा सा वो है. Okay, 3 things. Yeah. माइक के ऊपर करीब करना पड़ेगा. So I am honorably outspoken, frank, and honest. Yes, these are the 3 things. तो ना कॉम्बिनेशन, एक बंदा आउटस्पोकन भी और ऑनेस्ट भी हो तो लोगों के दिल तोड़ता है. हाँ? Okay.
but that's who you are, right? Okay. So if you were to use these strengths, where do you think you would be able to use these skills? In personal life Alive. or in professional Alive. life? Sorry? Both. So, like, obviously, honesty is wherever you exist because you have to be honest with your profession, with your, if you are a student, if you are mother, or if you are a sister. And the outspoken thing is because most of the ladies are outspoken here because we actually are very, not very suppressed. Lekin yes, we are not allowed to say whatever we think or whatever we experience because obviously I'm not going any political side or anything. लेकिन फिर भी so what are that is why I guess outspoken मेरे ख्याल से we should use it in a positive way and So if you have this skill, and I've noticed few other skills while we're talking, do you think 5 years from now you could actually be hosting something like this? no never I didn't even like yeah obviously Hale. शौक है लेकिन life is Hale. unpredictable Hale. so Hale. I Hale. wanted to if like there will be any chance There you go. You have a career plan. Hello, Assalamu alaikum everyone. So I'm a very practical, adaptable and independent. How does that help you at home? अच्छा सो मुझे शायद बहुत अर्ली और मैं ये सब खवातीन को कहना चाहूँगी कि खवातीन को बहुत अर्ली एज में जो यहाँ पे मदर्स बैठी हुई हैं यहाँ जो अभी इस एज में है जो अभी मदर्स लाइक दे आर गोइंग टू गेट मैरिड तो उनसे मैं ये एडवाइस आप समझ लें उनको करना चाहूँगी मैं एक सिस्टर भी हूँ मदर भी हूँ मेरी 3 बेटियां हैं मेरी माशाल्लाह तो मैं कहूँगी कि आपका प्रैक्टिकल होना बड़ा ज़रूरी है इंडिपेंडेंट बहुत अर्ली एज में अगर खवातीन इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो इस वक्त पूरी सोसाइटी के अंदर जो एक आप समझ लें कि विजन के साथ लोग चल रहे हैं कि खवातीन की एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं तो अगर एक खातून इंडिपेंडेंट हो जाती है तो बिलीव मी वो इतनी पावरफुल है वो इतनी एम्पावर्ड है कि वो सोसाइटी में कोई भी चेंज लेके आ सकती है और आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल होने के लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ता है इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको एम्पावर्ड होना पड़ता है तो ये सारी एक चेन है तो बहुत अर्ली एज में खवातीन को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए ताकि वो एम्पावर्ड हो जाए लोगों को आपसे काम ना करना आपके लिए काम ना करना पड़े आपको खुद अपने लिए काम करना पड़े Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. Okay, so I will take you through 3 things, right? हम पुराने ज़माने में जो है वो notes लेते थे कागज कलम, but now that everybody has a phone, so you can actually take your notes on your phones also. So there are things that come very naturally to you, right? Things that somebody like her who had the courage to step up and come and then talk to you. It's not a lot of people would have thought about it. I'm sure आप लोग बैठे हुए हैं, but very few had the courage to walk up and express what they wanted to express. Now, that's a good skill to have. To be able to communicate what you want is a great skill. And if you don't have it, you should learn to polish it as you go along because that's going to really help you in life. So, that's one thing that you've picked up. Things that come really naturally to you. Math, for me, came really naturally to me. Right? There could be things that you really enjoy. So हो सकता है एक काम हो जैसे मैंने कहा अपने example में math was really I'm good at. I didn't want to use it to build a career out of it. So it was a strength, but I didn't want to use it for work. I didn't pursue a career in accounting or finance or go. I choose to use a different line of work. The other thing that you can do is things that you really enjoy, right? So I went on a road trip. I do a lot of road trips with my family. We have been to Karachi like 10 times and Punjab past China border about 7-8 times. And we've come back after a week of being on the road. After 7 days of constantly traveling, 7-8 hours in the car. And I come home and Sarah goes to the kitchen and starts baking. I said, Sarah, what are you doing? Thak gayi ho, just relax. She says, no, I'm unwinding. I said, you're baking, right? That's work. You can do it tomorrow when there's a Sunday next day. She says, no, this is what I do. This is what I enjoy. So that's how she finds, it gives her joy to bake, which is why I'm fat. So
that is something that comes very naturally to her. It's ease. It's not work for her. For us, it's enjoyment. I'm a motorcyclist. I am half a mechanic, so I maintain my motorcycle. I maintain motorcycles of my friends. A lot of friends come over, bring their bikes. I work on them. I enjoy working on motorcycles. They don't pay me. They just want my company, and I make the tea also. They don't make the tea themselves. But there's something that I really enjoy, right? It comes very naturally to me. Maybe when I get old, I'll open a motorcycle maintenance shop, and अगर आप लोगों ने मोटरसाइकिल खरीद ली और maintain करानी हो तो मुझे ढूंढ लीजिएगा. I will do it for free. Now, the third thing is that you could actually talk to people and ask them. So you go to a friend and say, you know, what do you think is my strength? और अगर आपके दोस्त मेरे जैसे दोस्तों कहेंगे पागल हो गए क्या बात कर रहे हैं, right? Because we don't have this kind of conversation with our friends. तो कहेंगे कि भाई सत्या तो नहीं गया कहीं. And then you'll have to constantly probe them. You'll have to ask them, no, I want you to know, why are we friends? And he'll say कि यार because मैं तुम्हारे साथ खानी जगह पे था और तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुमसे बात करके मजा आता है. But वो तो हर दोस्त से आता है. It's not particular. It doesn't define who you are as a person. Any friend will tell you more or less the same things. But then be the devil's advocate and ask him, no, I want you to really dig down and find out why are we friends. And then you'll say, 8 years ago, I had a fever and you came and you took me to the hospital. Or something like that. Something really deep and meaningful will come out of that conversation. अगर आप 5-6 बार पूछे नहीं यार ये नहीं कुछ और बताओ. They will come to you. And when you ask them for their strengths, they will be able to guide you. Ideally, don't let it be your spouse. Because I asked my wife, you know, what do you think is my weakness? She started off, और 2 घंटे के बाद मैंने कहा सारा रहने दो कुछ और बात करते हैं. So don't do it with your parents or your siblings or your spouse. Do it with a friend, somebody that you trust and somebody's judgment that you value. And they will be able to guide you also. So inner reflection is one, and then looking at. मैं आपको there are certain things that you can develop also. Again, example मैंने आपको दिया tennis ball वाली, right? So I want you to get up again. Ajay, just stand up. Yeah, stand up. Don't be shy. Mahesh, you're not standing up. Okay, so I want you to say hello to the person to the right of you and the person to the left of you. Right? And I want you to tell them, in case you don't know their name, tell them your name. To the person to the right of you and to the person to the left of you. Okay. Now is the tricky part. I want you to look at them. Be in pairs. You're not doing this? Okay. And I want you to look at them and I want you to compliment them on something. All right. Thank you. Settle down. So, my point is that there are things that some people are not very comfortable doing because they've not done it before. So, what you have not done is have the courage to speak to a stranger or think on the cuff because you didn't come prepared to give somebody a compliment and somebody asked you to give a compliment, to think on the cuff and then really give it right then and there. Okay? So you can polish the skills with practice. Reflect back to the tennis story, you know, throwing with your left hand. If you start practicing enough, you'll be as good as your right hand. Now, once you look at the first list of strengths that you have, you can also put clusters into them. I will have to walk up to the stage. I hope the mic. Okay. So you will find कि आपने जो शुरू की लिस्ट देखी थी, उस लिस्ट में से कुछ चीजें इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं. And if you have a combination, you will find that they cluster into something. There are people who are really good at doing things. There are people who are really good at planning things. Think of the last time you went on a picnic. There was somebody who would have taken a very active role and said, "यार मैं plan कर देता हूँ." Somebody would have arranged the biryani. Somebody would have arranged the transport. Right? So आपके कुछ ना कुछ clusters होते हैं that you are really good at. Once you reflect on your strengths, you would be able to cluster yourself. You can go to gallup.com to learn a little bit more about this. Now,
I will take you through another thing. So उन्हीं को मैंने cluster कर दिया. Now you could be somebody who's very good at executing, or you could be somebody who's a strategic thinker. You could be somebody who's really good at influencing, which was probably you. And then you would be somebody who's really good at relationship building. अगर मेरा कोई एक बहुत बड़ा business idea है, and I am a strategic thinker, but I'm not good at executing, would it help if I partner with somebody who's good at executing? Yeah? Right? Because so we are generally afraid of asking for help. And that's another thing that you guys need to polish. If you're good at something, collaborate with people. I can explain this to you in another manner. This is my and my spouse's assessment, right? So I am a bit of a people-focused person. Sarah is a little outcome-focused person, right? So she's good at some things and I'm good at something. And we collaborate and we become a good couple, right? Because then the things that I don't do well, she does really well. इसी context को अगर आप ले जाएं इसके अंदर and you put it in work, you would be able to start collaborating with the right people. कि मेरी strength ये है, this is what I bring to the table, and if you're working in a team, you will have people like this. So collaborate with the right people, and then they'll be able to push you forward, push your agenda forward. Okay. Now I'll go through the last slide. I've been given my first time a warning. I'll try to wrap up. If you have identified your strengths, the first thing I said, start collaborating with the right people, right? And the second is start planning and communicating and develop the ability to execute, right? So if you have a team or if you want somebody to collaborate with you, you would also need to develop. Sorry, is the mic working? Yeah. Right? And then start thinking. The first idea goes through an iteration of improvement. And that's how you build things up as you go along. You know, rethink, go back to the drawing board every now and then and rethink your priorities. If you have done a SWOT analysis, do that. Whatever works for you. But learn कि आपके अंदर, it's a journey of self-discovery, that what are you good at? And then you start channelizing your energy towards that. And then start collaborating. And I will wrap up. Did I take your time too much? Are you up next? Oh, okay. Chale. Thank you very much. I hope this was of any help.